Hello everyone. Let's start with some another examples of tension member. In our previous lecture, we had understand about the how the analysis done in a tension member. For that, we have calculated some things like tension capacity of gross area, tension capacity of rupture of member, and the block shear failure. From these three capacity, we are considering the smallest one of them, which is known as a design tension capacity of the member, that is called as a TD. So now in the equation of that rupture, you can see that equation on page number 32 in IS 800 2007. In that equation, there is one thing which is most important for the calculation, that is net area of the member. What is this net area? So whenever we are finding out the capacity of the member during rupture, means in that case, whenever we drill the member for making a hole for the bolts, then the rupture of that member is done, and that rupture must be depending on the net area of the member. So now in IS 800 2007, they have told us that whenever this kind of rupture is done in our joint or in our member, at that time we must have to calculate that net area with the different ways, which is given on the page number 33 in IS 800 2007. So, dear student, for the understanding of the equation given on the IS 800, I have taken small examples for the calculation of net area. It is most important thing कि जब भी हम हमारा सेक्शन ड्रिल करते हैं फॉर द बोल्टिंग, उस वक्त उसकी स्ट्रेंथ जो रिड्यूस होती है, वो रिड्यूस्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है हमारे नेट एरिया पे. तो वो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा नेट एरिया फाइंड करना पड़ेगा. वो कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं. तो फर्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो वो क्या है. Here the question is, a plate of 230 mm by 10 mm is connected to the gusset plate by 20 mm diameter bolts using a chain bolting and a zigzag bolting. Determine the minimum net area of the plate. Whenever this kind of situation is done over there, then we must have to take consideration that there is chain bolting is there or else zigzag bolting is there. It's depend on us, but for the understanding, for the calculation of net area, here I have taken two cases. First is chain bolting. In that case, bolts are in a single row and in a single column. And in a zigzag bolting, what is that? Means the bolts are staggered, not in a single row like this or single column like this, but they are staggered, means some of here
some here. It is zigzag, and you know about the zigzag, what is zigzag. So यहाँ पे हमें फाइंड करना है मिनिमम नेट एरिया। क्यों मिनिमम फाइंड करते हैं? क्योंकि हमारा जो भी इक्वेशन है उसमें हम मिनिमम एरिया फाइंड करेंगे तो हमें मिनिमम कैपेसिटी मिलेगी। वो मिनिमम कैपेसिटी हम सेक्शन की कैपेसिटी कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हमने उस टाइप के दो केसेस लिए हुए हैं। चलो फर्स्ट में क्या बोला है कि यहाँ पे एक गसेट प्लेट है, दिस इज़ अवर गसेट प्लेट, वो 12 mm थिक की है और ये जो है दैट इज़ अवर प्लेट, द विड्थ ऑफ दैट प्लेट इज़ 230 mm, राइट। तो ये उसका क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पे ये बोल्ट्स दे रखे हैं, तो ये सारे बोल्ट्स ये रहे। इसमें ये साइड व्यू है कि ये गसेट प्लेट आ गई हमारी, ये मेंबर जो है वो कनेक्ट हुआ है, उसकी विड्थ 230 mm है और यहाँ पे ये बोल्ट्स हैं, ये ऐसे पुटअप किए हुए हैं, राइट। तो ये जो केस है दैट इज़ ऑफ चेन बोल्टिंग। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो यहाँ से अगर हमारी प्लेट कट ऑफ होती है, यहाँ से होती है, यहाँ से होती है, वॉटेवर कोई भी जगह से कट होती है, लेकिन हर जगह पे हमारे 4 बोल्ट के जो होल रखे हैं वहीं से हमारी प्लेट कट होगी। तो वो कट ऑफ हमारा नेट एरिया हो जाएगा। तो वो कैसे गिनते हैं? तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है, दैट इज़ फॉर द चेन बोल्टिंग। हियर हम क्या चूज़ करेंगे? हमारा डायमीटर ऑफ बोल्ट कितना है? 20 mm। डायमीटर ऑफ होल कितना है? 20 + 2, दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 73 इन IS 800। सो द नेट एरिया, ये इक्वेशन है टोटल विड्थ ऑफ द सेक्शन माइनस नंबर ऑफ बोल्ट इनटू होल ऑफ दैट बोल्ट एंड मल्टीप्लिकेशन विथ थिकनेस। इट इज़ गिवन इन पेज नंबर 32 IS 800 2007. So our net area is 230 minus 4 times of 22 diameter of hole into 10 mm thickness. So here we can get the net area, that is 1420 mm square. This is for the chain bolting. Now for the zigzag bolting, here we are consideration taking that it must be failure somewhere over here, here. These 3 probability is there. Then from here to here, 4th probability, here to here, 5th probability, and these and these. Total number of probability of failure we are considering that, and we are taking as a path of that failure pattern. So this section is for the zigzag bolting. Here end distance and edge distance, pitch distance and the gauge distance is given. It is putting over here. This is end distance, gauge distance, gauge distance, gauge distance. This is again end distance. This is end distance, pitch distance, pitch distance and end distance. Here they have given us the pitch distance for the different whenever the bolt is located on different position. So for the zigzag bolting, here we have a gauge distance that is 50 and pitch distance is 50 and 45, both are there. So for the calculation of the net area, here we have to assume that the failure pattern, so for that we are taking the path as a failure as we discussed. So first path, that is AB and FG, it is the 2 vertical bolts of the member. So if there is a vertical failure possibility, we are taking that as a chain bolting. So because it is in a vertical line, so the net area, that is 230 minus 2 times of
diameter of hole into 10. So, it is 1860 mm. Whenever the second path, that is CDE, it is also pure vertical. So, the equation is same like as a chain bolting, but in that case CDE means there are 3 bolt. So, here the number of bolt that we are taking is 3. So, the equation is 230 minus 3 into 22 into thickness of plate, that is 10. So, here we can get 1640 mm square. Now, the most important thing, that is the path is zigzag. Now, here we are taking path that ACDE, something like this. In that case, 4 number of bolts are there and one zigzag with pitch distance of 50. So, the equation given on page number 32 IS 800/2007, from that equation we are going to take the B as a 230 mm, number of bolt there is for 1, 2, 3 and 4 into diameter of hole, that is 22, plus summation of PSI square upon 4 times GI, means PSI means it is pitch distance and G, that is gauge distance. So, here our pitch distance is 50 mm and the gauge distance is again 50 mm. So, we are putting the gauge distance and pitch distance in this equation. So, we will get 1545 mm square net area of this path. Now, the next path, that is from here to here, the pattern is same but direction is different, FCDE. Here we are considering that, and they have given us the pitch distance is 45. That is why the minor change in this equation, that is here 45, in previous it was 50, but here it is 45. So, here we can get 1521.25 mm square the net area for particular this path. Now, the next and another last path, that is Acg and Fcb. So, plate of failure of this plate like this and this. Here we have two pitch distance as a different pitch distance. So, the same equation is writing over here, and the bolts in this there is 3 bolts. So, 3 into 22 plus for first pitch it is 50 square upon 4 times 50, it is a gauge distance, plus another, that is 45 square upon 4 times 50. So, here we can get 1866.25 mm square. Now, we are taking smaller of these all, that is 1521.25 mm square. This is our net area of the section. Clear, everybody? So, whenever this kind of situation is done in our case, we are considering the different path as a failure path, and from that we are considering the pitch distance and gauge distance and put that pitch and gauge distance in our equation that is given in IS 800. From that we can get the minimum net area. Clear? Very good. Now, for the understanding, still I have taken another case, and that case is determine the design tensile strength of the plate 160 mm by 8 mm connected to 10 mm thick gusset plate using M16 bolts as shown in the figure.
the yield stress of the steel is 250 and the ultimate stress is 410 megapascal. So यहाँ पे हमने क्या सोचा कि ये नेट एरिया से हम हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ ही चेक कर लेते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए रप्चर तो आने ही वाला है, तो वो रप्चर कैलकुलेट करने के लिए हमें नेट एरिया भी फाइंड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे जिगजैग बोल्ट दे रखे हैं, वो जिगजैग बोल्ट के हिसाब से हम नेट एरिया भी फाइंड करेंगे और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी यानी कि टीडी भी हम फाइंड करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस फिगर। यहाँ पे ये एंड डिस्टेंस, पिच डिस्टेंस एंड एंड डिस्टेंस दे हैव गिवन हियर। द एंड डिस्टेंस दैट इज 30 एंड पिच डिस्टेंस दैट इज 25। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टेंशन कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट टेंशन कैपेसिटी हमारी कौन सी होगी, TDG, राइट। दैट TDG इज गिवन ऑन पेज नंबर 32 IS 800 2007। सो वहाँ से हम TDG फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमें डेटा कलेक्ट करने पड़ेंगे। उस डेटा में हमें डायमीटर ऑफ बोल्ट चाहिए होगा, दैट इज गिवन 16 mm and the diameter hole that is 16 plus 2 is equal to 18. So it is given in IS 800. Now Fy and Fu they have given 250 megapascal and 410 megapascal respectively. Now the first thing that is TDG, the strength due to yielding of gross section. So that TDG is equal to Ag into Fy upon gamma m0. This equation is frequently used by us in each and every cases, and that equation is given on page number 32 IS 800 2007. So here the gross area that is 160 by 8 mm and the Fy that is 250, the gamma m0 that is 1.1 which is given on page number 30 in IS 800. From this data we can get the TDG that is 290.91 kilonewton. Without bolting, without any drilling, we can get this much strength of the plate. Now whenever we are going to done drill over there for the bolting in a zigzag pattern, then the net area is most important. So the strength due to rupture of the critical section, we have to find out the net area first. For that, still again we have to consideration that the failure path. So first here we have taken the chain bolting path as a failure path. So the equation that is net area is equal to B into N minus diameter of hole or else overall diameter into thickness. Here the thickness of plate that is 160 minus 3 bolts over here, 3 into 18 into thickness of 8. So we can get 848 mm square. So whenever this kind of situation, यहाँ पे हमने 3 बोल्ट पहले से ही ले लिए, तो 2 और 1 बोल्ट यहाँ से भी फेल हो सकता है, यहाँ से भी फेल हो सकता है, लेकिन कम एरिया किसका आएगा, जहाँ पे ज़्यादा बोल्ट है वही आएगा। सो यहाँ पे एक जो पाथ है वो हमने डायरेक्टली ABC वाला ही ले लिया है। क्लियर? यहाँ पे आप सबको पॉसिबिलिटी 110% कंसिडरेशन में लेनी है। नाउ द नेक्स्ट पाथ दैट इज हियर द ADC E and C, ADEC, here this kind of failure we have taken. So in this case the pitch distance that is 40 and the gauge distance that is 25, right. So we are putting this data in our equation which is given on page number 32. यहाँ पे कितने बोल्ट्स है, 4 बोल्ट और वो 2 स्टेगर्ड हैं, राइट। यानी यहाँ पे ये जो गेज डिस्टेंस है वो इसके लिए भी आएगा और इसके लिए भी आएगा। सो समेशन ऑफ दिस दैट इज 2 times of 40 square upon 4 times 25. Remaining things are same. So this is very much important for us. So here for this situation we can get the net area that is
960 mm square. Clear? This is 960 mm square. Now the another path, that is ADF EC, समथिंग लाइक दिस. सो यहाँ पे टोटल 5 हॉल हो गए एंड स्टैगर्ड कितने हुए, यहाँ पे एक स्टैगर्ड, यहाँ पे 2, 3 और 4 स्टैगर्ड हो गए यहाँ पे. तो ये समेशन जो है वो 4 टाइम्स आएगा. सो दिस डेटा अगेन पुट इन अवर इक्वेशन. सो व्हाट वी कैन गेट, द नेट एरिया, that is 1072 mm square. Now from this possibility we are taking the smaller net area. So here we have smaller net area, that is 848 mm square. Clear? Now नेट एरिया हमें मिल गया है. अब हमारा जो इक्वेशन है रप्चर का फॉर द प्लेट, वो इक्वेशन में हम सारा डेटा पुटअप कर देंगे. तो इक्वेशन इज TDN इज इक्वल टू 0.9 इंटू AN इंटू FU अपॉन गामा M1. 0.9 इंटू AN हमारा कितना है 848 mm स्क्वायर. सो पुटिंग ओवर हियर, FU हमारा 410 है, दैट दे हैव गिवन, एंड गामा M1 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 30 in ISO 800. So from that we can get the 250.33 kilonewton. Now from the TDG and TDN, the smaller of these two, that is 250 kilonewton, right? This TD is the strength of our plate. So यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हमने ब्लॉक शियर फेलियर क्यों नहीं लिया. तो ब्लॉक शियर फेलियर तब आता है जब हमारा फोर्स जो है वो एसेंट्रिक लगता है. प्लेट में ऑलवेज फोर्स हमारा सेंटर में ही लगेगा, तो ब्लॉक शियर आएगा ही नहीं. ब्लॉक शियर आने का जो चांसेस है, दैट इज फॉर द एसेंट्रिक लोड, राइट, एंड इट इज डन इन somewhere whenever we are going to put angle section in our connection. So यहाँ पे सिर्फ 2 ही हमने फाइंड किया है और 2 ही पॉसिबल है, TDG एंड TDN. उन दोनों में से जो स्मॉलर है वो हमारा TD हो जाएगा. क्लियर? सो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि नेट एरिया कैसे फाइंड करते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, राइट. ड्यू टू दैट नेट एरिया हमारा जो भी सेक्शन है, राइट, उसको जब भी हम ड्रिल करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर कम होती है. और वो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि दोनों में से रप्चर के लिए ही स्ट्रेंथ हमारी कम जनरेट होती है. क्लियर? नाउ थैंक यू एवरीबॉडी. अब हम बिल्टअप सेक्शन के लिए एग्जाम्पल्स नेक्स्ट सेशन में देखेंगे फॉर द टेंशन मेंबर. थैंक यू, टेक केयर.